Morning, everyone. Today's topic is movement, and it is the part 3. Our outlines are movements. Today, we will discuss about the short method of to find the movements and their problems. So, what is the short method? We know that if we find movement about any arbitrary number a, then we use a formula for rth movement mu r dash equal to summation fi xi minus a whole power r upon capital N. So now for the shortcut method, we let xi minus a upon h equal to ui, another variable ui. So the value of xi minus a will be uih. Okay. Now put this value in the main formula. In this main formula, now our mu r dash become summation fi ui h whole power r upon capital N, where if we apply power r on ui and h, then h to the power r summation fi ui power r upon capital N. It is the new formula. Now first moment about arbitrary constant became h power 1 summation fi ui upon capital N. Second moment about the arbitrary number become h square summation fi ui square upon capital N. Similarly, third and fourth moment becomes this. Now find f mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash and then find the other moments by the relations. इसमें ये जरूरी होता है कि आप पहले जो चार मूवमेंट है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अबाउट ही निकाल सकते हैं. अगर आप शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो जो फर्स्ट फोर मूवमेंट है हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अबाउट ही मिलेंगे और उसके बाद हमें रिलेशन यूज करना ही पड़ेगा मूवमेंट अबाउट मीन या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने के लिए. तो शॉर्ट मेथड सिर्फ तब यूज करना है जब आपको रिलेशंस अच्छे से पता है कि क्या है. अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ अ बैच ऑफ द 100 स्टूडेंट्स. कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट्स. The following table represent the length of the batch of the 100 students. Height in centimeter are given 51, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 and 75. This is the value of x and the number of students of these heights 0, 2, 6, 20, 40, 28, 2, 2. These are the frequencies. We have to calculate the first and second and fourth central movement. Central movement means movement about mean. We have to find first, second and fourth movement about mean. Now we use the short method for this. Short method, we apply formula for the rth movement about the arbitrary constant. Rth movement about the arbitrary constant for short method is mu r dash equal to h to the power r summation fi ui power r upon capital N. Now we will prepare the table. These are the value. मैंने सिर्फ values को आप पुट करा है. तो values हमारी x की थी 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 and the frequencies are 0, 2, 6, 20, 40, 28, 2, 2. Now first we prepare the table of u. ui values हमारे पास xi minus a upon h. where xi मतलब हो गया आपकी x की वैल्यूज. a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको x की वैल्यूज में से ही मिडिल वैल्यू लेनी. अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं x की वैल्यूज में तो मिडिल पॉइंट आसानी से आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल पॉइंट में आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी. तो आप कोई सी भी वैल्यू लेकर a को आगे कंटिन्यू कर सकते हो. क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर
ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, सो हमारा 67 इज द मिड टर्म और हमने ए मान लिया उसको। और एच की वैल्यू होती है जो हमारा इंटरवल होता है 59 61 क्लास इंटरवल, इनका डिफरेंस कितना है 59 एंड 61, 61 एंड 63 के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा एच होता है। तो एच की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 2, क्योंकि 59 61 डिफरेंस इज 2, 61 63 डिफरेंस इज 2, सो एच इज 2। सो यू आई फॉर्मूला बन गया एक्स आई माइनस 67 अपॉन 2। अब हम एक एक x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और एक एक x के करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट विल बी 59 माइनस 67 डिवाइड बाय 2, इट विल बी माइनस 4। 61 minus 67 divided by 2, it will be minus 3. Similarly, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. These are the value of u. Now we have to prepare FU table, FU square, FU cube, FU power 4. So FU table will be F into u, which will be 0, minus 6, minus 12, minus 20, 0, 20, 16, 6, 8. And the summation of FU is 12. Similarly, prepare FU square. FU square means first make the square of u and then multiply by f. So FU square will be 0, 18, 24, 20, 0, 20, 32, 18 and again 32, and the summation is FU square is 164. Similarly, FU cube is 0, 54 minus 54 because it is a cube, so the sign will be negative. Minus 48, minus 20, 0, 20, 64, 54 and 128. Now FU power 4, 0, 0, 162, 96, 20, 0, 20, 128, 162 and 512. Summation of FU cube is 144 and summation of FU power 4 is 1100. And the summation of the frequencies is 100, which is capital N. Now we'll put all these value in the previous formula. Now mu1 dash is H summation FU upon capital N. So H is 2, summation FU is 12 divided by 100. We will calculate it. It will be 0.24. H square, it means 2 square multiply by FU square is 164 divided by 100 and it will be 6.56. Third is 2 cube multiply by FU cube, summation FU cube 144 upon capital N is 11.52. And third is 2 power 4 multiply by 1100 divided by capital N is value is 176. Now we have prepare mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. Put all these value in the relation to find second and third. We have also find the third moment. No, it is only first, second and fourth moment. So first moment about mean is 0. We know that. Second moment about mean formula relation is mu2 dash minus mu1 dash square. So mu2 dash is 6.56 minus mu1 dash is 0.24 whole square. The calculation is 6.5024. Now
Mu4 is mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash power 4. Put all these values. So we will find it to 167.197. So these are the mu2 and mu4 about the mean, and it is a problem based on short method of the to find the moments. These are the references. Disclaimer. Thank you.